All right, my dear friends, I think we are live on the YouTube channel of IPMAT Wallah. IPMAT Wallah, I would say that one-stop solution for all your requirements, for all your studies which are related to IPMAT and GIPMAT preparation. So friends, welcome back once again in our next session of IPMAT Pathfinder 2026. I hope I'm clearly visible and audible. Already some students have joined in. Wonderful to see all of you. Guju Bhai says just 7 minutes to go. I'm so excited for today's class. All right, great yaar. I'm also very excited to teach all of you. Zoya says hello Zoya. I'm good yaar. Thank you very much for asking. And I believe all of you are also in good health. Festive season is around. I hope you all are taking good care of your health, right? So friends, quickly जल्दी से बता दो क्या मैं clearly visible हूं, क्या मैं clearly audible हूं. चरण अरे रौनक यार, आपका बड़प्पन है. जय हिंद यशवीर, जय हिंद. जोया, मैं बहुत बढ़िया हूं. आई एम इन गुड हेल्थ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम विद ऑल ऑफ यू, helping all of you for the preparation of IPMAT examination. Right? Perfect. So all clear, says Zoya. Yes, you are, says Yashveer. Thank you very much for the confirmation that I am clearly visible and audible. Now, friends, today we are going to continue from where we have left in the previous lecture. Now, in these sessions of IPMAT Pathfinder, what we are doing is we are focusing on one area that is called data interpretation, right? Now, yes, we do find good number of questions from data interpretation in each of these examinations, right? Now, previously in the previous series of sessions that we have covered on YouTube, I have covered some different topics from logical reasoning, right? So this time I decided to give more focus, right? Give the entire focus on data interpretation, so that at least you all, जिसने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जिसको पता नहीं है कि डेटा इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हैंडल करना होता है, so all of you should be able or will be able to at least give yourself a start as far as data interpretation is concerned. Now today it's the second lecture of data interpretation. Is it for IPMAT Master Quiz? Swadha, this session is for every student who is preparing for IPMAT 2026, right? IPMAT या GIPMAT एग्जाम, या फिर इन एग्जाम्स के अलावा अगर आप सिम्बाइसिस का टेस्ट के लिए अपीयर करना चाह रहे हो, नारसी मुंजी एनपैट के लिए अपीयर करना चाह रहे हो, राइट? क्राइस्ट के एग्जाम के लिए अपीयर करना चाह रहे हो, सो इन एनी एग्जामिनेशन वेयर यू आर टेस्टेड फॉर data interpretation, this session will be useful for all those students. Also, the usage of this session is for those students who are a little weak as far as data interpretation is concerned. आपको पता नहीं है डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आपको पता है क्या होता है बट आप वीक हो, आपसे कैलकुलेशंस हैंडल नहीं होती हैं, या फिर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो कि डेटा इंटरप्रिटेशन की स्टडीज किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए. तो ये जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर डेटा इंटरप्रिटेशन 1 का जो लेक्चर था आईपीमैट पाथफाइंडर में, वो वाला बहुत ही एलिमेंट्री लेक्चर था. वहां पे मैंने बताया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको किस किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए, राइट? सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. मैंने बता दिया है कि आज के सेशन का यूज किस किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, राइट? सो लेट्स बिगिन विद डेटा इंटरप्रिटेशन 2. नाउ बिफोर आई विल सेट द एजेंडा फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन 2, हैप्पी दिवाली. आई वांट टू विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों. हैप्पी दिवाली तो मेरी तरफ से हो गया, बट आईपीमैट वाला की तरफ से हैप्पी दिवाली कैसे होगा? Looking at these offers. So friends, on the occasion of Diwali, on this festival of Diwali, we have, अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बम पटाखे फूट रहे हैं. So I hope you all are not getting disturbed because of this noise. That is because of crackers that are bursting outside. So let's continue. So ये जो offers हैं ये specially आप लोगों के लिए हैं on this occasion of Diwali, right? So IPMAT Master Quest का जो batch है, right? Master Quest 2.0 2026, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 7,999. Now it is available at an offer price of 2,499. One more chance to all of you to enroll for this batch.
At the same time, IPMAT Master Quest 3.0 2026 बैच जिसका ऑफर प्राइस है 2,499 रुपीज वंस अगेन, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IPMAT Pro 2026 जिसका ओरिजिनल प्राइस है 15,299. You can join this batch at an offer price of 5,999 only. जल्दी से यार, दिवाली के ऑफर्स हैं, इनको मिस मत करो. क्विकली ज्वाइन एनी ऑफ दीज बैचेस, एंड ये बैचेस ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को प्रॉपर फंडामेंटल्स कवर करने को मिलेंगे, मेरे साथ और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा इन द लाइव क्लासेस दैट वी टेक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ IPMAT वाला. सो ये सारे ऑफर्स वैलिड है सिर्फ 27th of October 2025 तक. सो हरी अप एंड ज्वाइन एनी ऑफ दीज बैचेस, राइट? ठीक है, चलिए नाउ गोइंग फर्दर. अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा है, अरे गायब हो गया मैसेज, चलो कोई नहीं. सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था. सो लास्ट क्लास का जो एजेंडा था वो यहां पे है. सो लास्ट क्लास में हमने कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स किया था, एंड वी पुट मोर फोकस ऑन परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस. अब परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस एक ऐसी चीज है जिसको याद करने से हमारी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है क्वेश्चंस में आंसर निकालने की, राइट? ऑल्सो परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस अगर आप याद कर लेते हो, so this particular thing will not only help you in the calculations in data interpretation, but it will also help you in the questions of quantitative aptitude. Quant में percentages का चैप्टर है, वहां पे भी आपको यही चीजें पढ़ाई जाएंगी, एंड वहां पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेजेस से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो भी परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस होंगे, वहां पे आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम सेव कर सकते हो इफ यू have a good command over the percentage equivalence of fractions, right? So in the previous lecture, जो first lecture था, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से percentage equivalence of fractions important हैं, how we can convert a fraction into its percentage और vice versa. हमने ये देखा था last class में, right? Now let's implement this particular thing, right, on percentage increase or decrease, percentage change. तो 5-10 मिनट हम स्पेंड करेंगे लुकिंग एट द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस, एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन कंप्लीट सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. सो प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, एंड व्हाट ऑल इट टेक्स टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके जी, चलिए. हाँ, अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो फोकस करके देखोगे आज की क्लास, तो कुछ चीजें तो समझ में आएंगी, और जो हम डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट सॉल्व करने वाले हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस, राइट? नाउ I'll start by giving you a percentage equivalent of fraction. So let's say 1/3, हमें पता है 1/3 का percentage equivalent क्या होता है. So fraction given है आपको 1/3. So can you all tell me the percentage equivalent of 1/3? जल्दी से chat box में लिख दो. Come on, quickly. जल्दी. Absolutely correct. Very good, Ruchi. So I can see some of you are writing the correct answer. Wonderful, lovely. So 33.33%. Okay. Now let's say if any question is asking you to increase, let's take a number. Let's say 144. So a number is 144. Increase 144 by 33.33%. Okay. So after increasing 144 by 33.33%, what will be the final value? This is what we'll have to calculate. ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको 33.33% मिलेगा, आपको 1/3 नहीं दिखेगा, राइट? सो ये आपके ऊपर है कि आपको 33.33 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट याद है या फिर नहीं. ओके, नाउ if I'll start calculating 33.33% randomly in any direction, it will consume plenty of time. But if we have an idea that 33.33% is nothing but 1/3 of that number,
So I'll calculate 1/3 of 144. 144 का 1/3 कितना होगा? Can you please help me with this number? Be with me. Come on, everyone. So 144 का 1/3 कितना होगा? रुचि, आपने क्या किया? आपने 33.33% मैन्युअली कैलकुलेट किया. ये करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे. 33.33 अप्रोक्सीमेटली इज 1/3 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस. सो मैं क्या करूंगा? मैं 1/3 निकालूंगा 144 का, which is equal to, yes, anyone? Absolutely, Ruchi, 48, right? So that means I'll have to increase 144 by this number 48. So 144 plus 48, that will be the answer, 192. So it will save our precious time that will waste in calculating 33.33% of 144. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, right? So let's say the number is 224. So what I have to do is I have to increase 224 by 14.28%. अब मैंने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया है. Now 33.33 was an easy fraction to remember, right? 14.28 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है? जल्दी से बता दो. Come on, everyone. Come on, I'm waiting for all of you. 14.28 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट. Very good, Ruchi. That's nice. Chinmaya, very good. So 14.28 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/7. So if I have to increase this number by 14.28%, that means I'll have to increase this number by 1/7 of this number. Now 1/7 of 224 will be calculated. 224 divided by 7 कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए. 224 divided by 7. 224 divided by 7. What is the number? Absolutely 32. Good. So 32 is the value. So that means I'll have to increase 224 by a value of 32. And the final answer will be, yes, anyone? What will be the final answer? Ronak, absolutely correct. इन दोनों को add कर देंगे. 256 will be the final answer. Okay. Now this is the use of remembering percentage equivalence of fractions. ठीक है? एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं. सो अभी यहां पे हमने क्या किया था? इंक्रीज किया था. नाउ लेट्स डू अ डिक्रीज. डिक्रीज करते हैं. ओके, थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आते हैं क्वेश्चन में. सो लेट्स से क्वेश्चन सेज द नंबर इज 288. 288 is the original number, right? 288 is the original number, and I will have to decrease this number by 12.5%. 12.5% से decrease करना है. So first of all, tell me what will be the fraction equivalent of 12.5%, and then tell me the final answer of this question. We'll have to decrease 288 by 12.5%. All right, Ashutosh, very good. So fraction equivalent of 12.5%. I want to see this thing on the screen. Nice. So this is the 1/8. Absolutely correct. So 1/8. So 1/8 of 288. 1/8 of 288 will be calculated. So what will be this number? 288 को 8 से डिवाइड करना है. ठीक है? So 288 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? It will be 36. 36 पता लग गया? ओके, सो 36 से इंक्रीज कर देंगे. फाइनल आंसर विल बी 288. इंक्रीज नहीं करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे. -36. Be careful. So we had to decrease this number by 12.5%. All right. ठीक है जी. So 288 minus 36, you can write the answer. So that will be 252. So 252 will be the final answer of this question. Are we good about this? Ronak ने already answer दे दिया. Ronak says 252. Very good, Ronak. Now, friends, let's
गिव दिस क्वेश्चन वन मोर ट्विस्ट, एक और छोटा सा ट्विस्ट देते हैं। ओके, सो यहीं से ही रिलेशन मिलेगा आपको। सो लेट्स से द ओरिजिनल वैल्यू इज क्या ले ओरिजिनल वैल्यू 408. 408 is the original value and I have to decrease this value by 37.5 percentage. Okay, now 37.5 percentage हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था, बट मैंने आपको एक और छोटी सी चीज बताई थी, उसका एप्लीकेशन अब देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 37.5 परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना होगा? What will be the fraction equivalent of this number, of this percentage? Come on guys, jaldi. 37.5 percentage. Now if I look at 37.5 percentage, 37.5 percentage is 3 multiplied by 12.5 percentage. 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 आ जाएगा। ओके, नाउ 12.5 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 दैट इज 3/8. सो द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 37.5 परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/8. ठीक है, नाउ आई विल कैलकुलेट 3/8 ऑफ 408. सो ये जो नंबर है इसका 3/8 कैलकुलेट करेंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी कितना? 51. नाउ 51 into 3 is 153. So whatever this number is, I'll decrease this number by 153 to obtain the final answer. So answer कितना आ जाएगा? 255. So 255 will be the final answer. रुचि 153 नहीं होना चाहिए बेटा, 154 होना 154 नहीं होना चाहिए, 153 होना चाहिए। आपने 154 लिख दिया था। ओके, सो 153, 3/8 of 408, 408 divided by 8 is 51. 51 into 3 is 153. अब इस नंबर को 153 से रिड्यूस कर दो एंड ऑब्टेन द फाइनल आंसर। ऑलराइट, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्लियर है, यस और नो? 255 will be the final answer. Come on, all of you tell me, are you able to understand these basic elementary things? Yes or no? Very good, Ashutosh. Nice. Chaliye. Lovely. So friends, this is the application of remembering percentage equivalence of fractions. This is the use of remembering percentage equivalence of fractions, right? Now let's get into solving one complete set of data interpretation. Elementary set है, ज्यादा difficult नहीं है, basic सा set है. Okay. Now a little bit of understanding and a little bit of handling the calculations will be required in this set. Okay. So simple सा set है. So first of all, the entire data related to the set on your screen. So analyze this data, whatever is given with the table. So the first type of data set that you will see in data interpretation will be tabular data, where the data is given in the form of a table. यहाँ पे table की form में data given है. Okay, data can also be given in the form of bar graph, pie chart, line graph. एक एक करके हम ये सारे type of data analyze करेंगे, देखेंगे. But first of all, tabular data. So have a look at this information and analyze this and post done in the chat box once you want me to take you to the questions. Okay? Come on. I'm waiting for your acknowledgement. Post done in the chat box once you are done reading this information and you want to start solving the questions. So Priyanshu is done.
show questions. Okay, Priyanshu, I'm waiting for acknowledgement from other students. So just give me 30 seconds more and then I'll start displaying the questions one by one. Okay, chaliye. So meanwhile, let's do the analysis. Let's read whatever is given to us. So first of all, you are given that 5 people A, B, C, D, E, as you can see in the table as well. 5 people A, B, C, D, E work in XYZ organization and earned a certain amount of salary. So their salaries are also given in rupees and saved a certain part of it in all the months of a year. So this data that is given to us is a monthly data. So यहाँ पे person का नाम, उसकी salary और उसकी saving. These three things are given. Okay, important is salary and the saving. Now saving in terms of rupees given नहीं है, saving in terms of percentage given है. So I can calculate the saving in terms of rupees. So saving is 20% for the first person. So can you tell me, just asking you, if I talk about the first person A, so A की salary given है 20,000. Now A's saving is given as 20%. So what will be the saving of A in terms of rupees? A का saving कितना होगा? What will be the saving of A in terms of rupees? जल्दी से बता दो. Absolutely. So 20% of 20,000. 20,000 का 20%. अब 20,000 नंबर है, इसका 20% कैलकुलेट करना है, तो ये भी हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं. Some students might be able to do this orally, but कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं. ठीक है, सो ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रगल करते हैं. ठीक है, अब इसका 20% निकालना है. तो लुक एट दिस नंबर गाइस. इस नंबर का 100% क्या होगा? किसी भी चीज का 100% वो कंप्लीट चीज खुद ब खुद होती है. तो 100% विल बी 20,000 इटसेल्फ. 10% कितना होगा? मैंने यहां पे 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो. सो 2000 विल बी 10%. सिमिलरली 1% कितना होगा? 200. राइट, बस ये चीज याद रखो. अब अगर मैं बोलता हूं कि 20% कैलकुलेट करना है मुझे और 10% ये है, तो 10% जो भी है तो 20% उसका डबल हो जाएगा. तो 10% यहां पे 2000 है, तो 20% कितना हो जाएगा? 2000 का डबल, दैट इज 4000. ओरली भी हम हैंडल कर सकते हैं ये सारी कैलकुलेशंस. ठीक है. हाँ, सिमिलरली अगर मुझे 2% निकालना होता तो 1% पता है, 2% हो जाएगा 400, 3% विल बी 600, 4% विल बी 800 एंड सो ऑन. इन नंबर्स को जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, तो सेविंग पता लग गई 4000, सैलरी ऑफ 20,000, सेविंग ऑफ 4000. नाउ आई एम गिवन द फॉर्मूला दैट सैलरी इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंसेस. सो इस पर्सन के एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे? कैन यू राइट दिस नंबर? व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस ऑफ दिस पर्सन? 20,000 इसकी सैलरी है, 4,000 ये सेव कर रहा है, तो दैट मींस इसने खर्च कितना किया? सो एक्सपेंसेस विल बी इक्वल टू सैलरी माइनस सेविंग. 20,000 minus 4,000, which is 16,000. So 16,000 will be the expenses of this person. All right, fine. ठीक है. So this is the data, like how data can be interpreted. This is how we can do this thing. Okay. आगे चलते हैं. Question number 1 on your screen. Question number 1 on your screen. What is the average monthly expense of C, D, and E together? What is the average of the monthly expense of C, D, and E together?
So please post your answer in terms of option A, B, C or D. So प्रियांशु बोल रहा है ऑप्शन C is correct. ओके प्रियांशु बेटा एक बार लिखो आंसर, बस एनफ है. ओके सो प्रियांशु says option C is the correct answer. Anyone else? Okay. All right. Now I'll go back to the previous screen and let's try to find out the salary. Salary to given hai, saving and expenses for each of these 5 people. They will be required. Okay. So savings, I'll be writing the savings. So all of you, I'm asking you to write all these 5 numbers in the chat box. Saving of A, B, C, D, E. जल्दी से इसको chat box में लिख दो. Come on. All of you. In the same message, एक एक करके मत लिखना. Write all these 5 numbers in the same message, in the same chat. So meanwhile, I'm writing these numbers. Savings of A हम already find out कर चुके थे. 4,000. Savings of B 15% of 40,000. Now 40,000 का 10% होगा 4,000. 10% होगा 4,000 and 5% उसका भी half 2,000. So 6,000 will be the savings of B. Savings of C will be 10% of 50,000, that is 5,000. Savings of D 25% of 25,000. Now 25% हमें पता है 1/4 होता है, तो 25,000 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. So that is 6,250. And finally for E 30% of 30,000. Now 10% होगा 3,000. 30% will be 3,000 multiplied by 3, that is 9,000. So these are the savings of these 5 people. Okay. Now with the savings, I'll also write the expenses. So expenses of these 5 people. Okay. So all of you can write the values of expenses as well. So 20,000 minus 4,000, it is 16,000 for A. 40,000 minus 6,000, 34,000 for B. For C, it will be 45,000. For D, it will be 25,000 minus 6,250, that is 18,750. And finally for E, it will be 21,000. Right? So these are the 5 numbers. Ronak, thank you. Thank you for writing these numbers. Good. So these are the 5 numbers. Okay. So now I can refer this data in each and every question and try and find out the answers. तो मैं क्या करता हूं कि instead of the table that I already have, I'll copy this table. मैं ये वाला improved version copy कर लेता हूं. All right, friends. So now let's have a look at these questions one by one. So question number 1 का आंसर एक बार दोबारा से आप चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से. Question number 1 का आंसर. You can write the option number A, B, C, D. So one of the students has given option C as the answer. So what is the average of monthly expenses of C, D and E? Now monthly expenses of C, D and E, मुझे इन 3 numbers का average चाहिए. So average of these 3 numbers will be their sum divided by 3. Okay. Now sum 45,000, 18,750 and 21,000. The sum of these 3 numbers,
45 and 18, 63, 63 and 21, 71, 63 and 21, 84. So 84,750 is the sum. When divided by 3, I'll get 28,250. So 28,250, option C. Yes, option C is the correct answer of this question. Okay, fine. Let's move on and look at the second question. Meanwhile, Lakshita is asking a question. Lakshita says, sir, in IPMAT Indore, any DLR set idle time in exam for one set, how much time? Now, Lakshita, idle time तो देखो यार कुछ नहीं होता, जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए उतना बेटर है. बट आई वुड से दैट इन IPMAT इंदौर 5 क्वेश्चन का जो एक सेट आता है उसके लिए idle time will be 7 to 8 minutes for the entire set. 7 to 8 minutes. So Yash, as far as marathon is concerned, no, I am Bangalore का जो टेस्ट है उसके लिए as such कोई marathon अभी प्लान नहीं है. But I'll look at if I can do something in this regard. Okay. All right. Now question number 2, monthly expenses of D are what percentage of monthly salary of B? All right, option A. चेक करते हैं कैलकुलेट क्या करना है. Monthly expenses of D. Monthly expenses of D, that means 18,750, are what percentage of the monthly salary of B? Monthly salary of B is 40,000. So the first number, this is what percentage of the second number. So first number 18,750 is what percentage of 40,000? Multiplied by 100 कर देंगे percentage calculation के लिए, right? So this is what we'll calculate. Okay, so do the calculation and get the answer. अब इसका सबसे सही तरीका क्या है अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ 40,000 का 10% और 40,000 का 50% कैलकुलेट करते हैं. मैं 50% की तरफ क्यों जा रहा हूं? बिकॉज ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नियर टू 50%. ठीक है, तो इसका मैं 50% कैलकुलेट करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल 50% विल बी 20,000. 50% इज हाफ, तो 40,000 का 50% इज 20,000. मेरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 18,750 वो उससे कम है, राइट? सारे ऑप्शंस भी कम है. ओके, तो अब मैं यहां से 1% सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 40,000 का 1% कितना हो जाएगा? 40,000 का 1% विल बी हाउ मच? यस, एनीवन? 1% विल बी 4,000. तो 1% अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 49% आ जाएगा, विच विल बी 16,000. Sorry, 1% will be 400. My bad. So 1% will be 400. So 49% will be 19,600. But मेरा आंसर तो उससे बहुत कम है. तो 1% 400 सब्ट्रैक्ट करने की जगह मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? इन दोनों में गैप कितना है? व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू नंबर्स? यहां पे गैप कितना है? 1000 से ज्यादा का गैप है, 1250 का गैप है. तो 1% कितना है? 400. तो मैं 3% से ज्यादा 1200 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. तो आंसर क्या आएगा? 50% में से 3% से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस 46.875. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, फाइन, ग्रेट. Now let's move on to the third question. Option A is the correct for this one. Third question. Third question on your screen.
रोहतक वर्सेस आईपीमैट इंदौर, विच डीएलआर सेट इज कंसिडर्ड जनरली हार्डर? बेटा आईपीमैट इंदौर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी डेफिनेटली थोड़ा हायर होता है एज कंपेयर टू रोहतक. So please tell me CUET hard. So Priyanshu, what do you want to know? CUET difficult है या नहीं है? CUET बहुत difficult एग्जाम नहीं है यार. Now question number 3, by what percentage is monthly expense of C and E together more than their combined monthly savings? All right, Priyanshu and Ronak says option D. Okay, that's nice. चलिए कैलकुलेट करते हैं. By what percentage is monthly expenditure of C and E together? So पहले ये चीज कैलकुलेट करते हैं. C का एक्सपेंडिचर एंड E का एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड किया. So 45 plus 21, that is 66,000. So first number is 66,000. Okay? Is more than their combined monthly saving. इनकी monthly saving कितनी है? 5,000 and 9,000, that is 14,000. So second number is 14,000. So we'll have to find out the first number is what percentage more than second number. तो पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है? वैल्यू वाइज 66,000 minus 14,000. Okay, divided by the second number more than their combined monthly salary saving. So denominator में क्या आएगा? Their combined monthly saving, which is 14,000 multiplied by 100. Okay, so 66,000 minus 14,000 is 52,000 divided by 14,000 into 100. अब कैंसिल किया. Now 14 multiplied by 3, 14 multiplied by 3 is 42 and 14 multiplied by 4 is 56. तो ये जो डिवाइड करके आएगा ये 3 और 4 के बीच में होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 300 और 400 के बीच में होना चाहिए. एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 300 एंड 400 के बीच में है, which is option D, that is 371. Okay? Now moving ahead to the last question of this set. Find the difference between the sum of monthly savings of D and E together and the monthly salary of A. A very easy question to end with. All right. Now two numbers, हमें उनका difference find out करना है. The first number is the sum of monthly savings of D and E together. D का सेविंग है 6,250 एंड E का सेविंग है 9,000. इनका सम कर देते हैं. तो जो फर्स्ट नंबर है ये कितना आएगा? 15,250. This is the first number. The second number, monthly salary of A. Monthly salary of A is 20,000. So second number is 20,000. अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए. डिफरेंस आराम से कैलकुलेट हो सकता है. 20,000 and 15,250. The difference is 4,750. So 4,750, option A will be the correct answer of this question. All right, ठीक है? So that's all. That's it. The last question is also done. So friends, today in this session we have seen the application of percentage equivalence of fractions and then one complete set of data interpretation in which the data was given in the form of tables.
Now we'll stop here for the day and we shall continue where we are leaving today in the next session of IPMAT Pathfinder 2026. Thank you very much to all of you. But before I go, once again, I'll announce this Diwali offer. Obviously, the entire team of IPMAT Wallah wishing you a very, very happy Diwali. And on this occasion, IPMAT Master Quest 2.0 is now available at an offer price of 2499. IPMAT Master Quest 3.0 is also available at 2499. And IPMAT Pro 2026 is available at an offer price of 5999. So guys, jaldi se 27th of October se pehle just go ahead and join any of these batches, right? So a very, very happy Diwali to all of you. Enjoy Diwali responsibly, right? And I'll see you after Diwali in the next session of IPMAT Pathfinder. Till then, a big thank you to all of you from my end. Have a nice time. Good night.